अस्सलाम वालेकुम नीट एस्पायरेंट्स। Thermodynamics. The laws of thermodynamics deals with energy changes of macroscopic system involving a large number of molecules rather than microscopic systems containing a few molecules. Thermodynamics is not concerned about how and at what rate these energy transformations are carried out, but is based on initial and final states of a system undergoing the changes. Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state. Macroscopic properties like pressure and temperature do not change with time for a system in equilibrium state. In this unit, we would like to answer some of the important questions through thermodynamics. The system and the surrounding. A system in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe constitute the surrounding. The universe equal to the system plus surrounding. यानी कि जो यूनिवर्स होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बनता है, उसको यूनिवर्स कहते हैं। और जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीकर को देख रहे हैं तो बीकर सिस्टम हो गया और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग हो गई। और सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स हो गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम. There are 3 types of system. Number 1, open system. Number 2, closed system. Number 3, isolated system. In an isolated system, there is no exchange of energy or matter between the system and the surrounding. The presence of reactant in a thermos, flask, or any other closed insulated vessel is an example of isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है, बट क्लोज सिस्टम में कंडक्टेड वाल के थ्रू, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीकर लिया है, वो बीकर किसी मेटल का है तो उससे हम हीट कंडक्ट कर सकते हैं, उसको सिस्टम में सेंड कर सकते हैं, तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। नाउ we will discuss about the internal energy as a state function. When we talk about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy of the system. It may be chemical, electrical, mechanical, or any other type of energy. You may think of the sum of all these is the energy of the system. In thermodynamics, we call it the internal energy U of the system, which may change when heat passes into or out of the system, work is done on or by the system, matter enter or leave the system. यानी कि ये 3 कंडीशन में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। वर्क. जब हम किसी रिएक्शन में वर्क देखते हैं तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में देखते हैं, और अगर उसको हम देखते हैं वर्क निकालते हैं तो उसको हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, और जो रिएक्शन होती है उसके टेम्परेचर चेंज को देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं। तो इसके 2 वेज होते हैं, 2 वेज होते हैं, जिसमें पहला जो वे होता है उसमें मैकेनिकल वर्क किया जाता है, उसके थ्रू हम टेम्परेचर चेंज को देखते हैं और इंटरनल एनर्जी चेंज को एग्ज़ामिन करते हैं। और सेकेंड वे जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रिकल वर्क के थ्रू एनर्जी चेंजेस को देखते हैं। हीट जो होती है वो हम
ऐसा बीकर उसके लिए कैरी करते हैं, ऐसा क्लोज वेसल कैरी करते हैं जो एक मेटल का बना होता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। वी कैन आल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम the surrounding to the system or vice versa without expenditure of work. This exchange of energy, which is a result of temperature difference, is called heat Q. According to the first law of thermodynamics, delta U equal to Q plus W. This is first law of thermodynamics. Uh, Now comes to the problem number 6.1. Express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by the system from the surrounding but work is done on this system. What types of wall does the system have? Of course, adiabatic, and system will be isolated. Delta U equal to W adiabatic. Wall is adiabatic. Number 2. No work is done on this system but Q amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding. What types of wall does the system have? Yes, of course, it will be a metal wall by which the heat can transfer, that is delta U equal to minus Q, because energy is taken out from the system, and thermally conducting wall. Then third question is W amount of work is done by this system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? Delta U equal to Q minus W, and it will be a closed system. Problem number 6.2. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expand isothermally at 25 degrees centigrade into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? We know that Q equal to minus W, लेकिन यहाँ पर जो गैस है वो वैक्यूम में है, तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, तो प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 × 8 इक्वल टू 0. नो वर्क इज़ डन, नो हीट इज़ एब्जॉर्ब. प्रॉब्लम नंबर 6.3. Consider the same expansion but this time against a constant external pressure of 1 atm. यहाँ पर Q इक्वल टू माइनस W, P एक्सटर्नल यहाँ पर 1 रखेंगे, इंटू 8 करेंगे तो 8 लीटर एटमॉस्फेयर आ जाएगा आंसर. है प्रॉब्लम नंबर 6.4 की. यहाँ पर कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली. यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो जाएगा. Q इक्वल टू माइनस W इक्वल टू 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल. यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 393.66 लीटर एटीएम. एंथैल्पी. We know that the heat absorbed at constant volume is equal to change in the internal energy, that is delta U equal to QV. But most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flask or test tube under constant atmospheric pressure. We need to define another state function which may be suitable under this condition. You can see the formula of delta H. Delta H equal to delta U plus delta PV for finite changes. At constant pressure, we can write equation delta H equal to delta U plus delta PV. Since P is constant, we can write
delta H equal to delta U plus P delta V. It is important to note that when heat is absorbed by the system at constant pressure, we are actually measuring changes in the enthalpy. I repeat again that when heat is absorbed by the system at constant pressure, we are actually measuring changes in the enthalpy. You can see the formula of work and this formula, that is minus 2.303 nRT log V final upon V initial, is very important formula, and many objective question comes from this formula. Free expansion of gas in vacuum is called free expansion. No work is done during free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. जो वैक्यूम में गैस होती है वो उसमें फ्री एक्सपेंशन होता है।